So next up, we have Diksha Ahi, who is the project manager at Vedantu. She is also the head academic counselor of the Centric Learning Edge Private Limited. She is a professional speaker and has been invited in various panel discussions at different prestigious forums, inclusive of Teach for India, Global Shapers Community Hubs, UNICEF, and IIT-BHU. Today, she is here to apprise us about stress management, which is certainly the need of the hour. Over to you, ma'am. Thank you so much, Jia. I would request you to kindly pin me so that if you could also pin me so that everybody can see me. Yeah. Let me know once. Okay, great. Thank you so much. Hi, everyone. I'm Diksha. I currently work with Vedantu, and some of you might already know about the EdTech startup. I am here to talk about stress management, and I've prepared a small presentation for you all. But before that, I just want to do a quick, check as to what is the language you are most comfortable with. Do you want me to talk in English or Hindi? Kindly write it down on the chat box, English or Hindi, whatever you write. I'll speak in that language. आप चैट पे लिख दो आपको इंग्लिश में पूरा सेशन सुनना है या हिंदी में या दोनों. तो आप इंग्लिश लिख सकते हो फिर. English. Great. I see most of you are saying English. I'll go with that. Quickly tell me what are the things that and I think everybody knows stress होता क्या है, right? सबको पता है कि stress होता क्या है. तो मुझे फटाफट बताओ कि आपको क्या चीज है जो stress out करती है ज्यादातर? What is the thing that stresses you out the most? Workload. Okay. Exam, socializing, deadlines, assignment submission date. Okay. Relations, handling to everyone's need, tests and exams. Okay. Socializing and bad communication skill. What else? Keep that coming. I'm happy to see your responses. Workload and unwanted arguments. Very interesting. Okay. So I'll also start presenting now, and I'll quickly take you through what I've prepared for you for today. Can everybody see the presentation? Yes, ma'am, it's visible. Yes, it is visible. Okay. तो पहले हम quickly समझते हैं कि stress होता क्यों है. Right. हमें पता तो है stress क्या होता है, but क्यों होता है. So it is a physical reaction to a person's emotions. Whatever, I think Ayu was talking about emotions, and he taught you about a variety of emotions and उसके पीछे क्या message होता है. I'll not get into that, but stress जो है ज़्यादातर physical reaction होता है to a person's emotion. आप जैसा feel कर रहे हो, and both positive and negative events can cause you stress. Like somebody said, socializing causes me stress. A lot of people like to socialize, but फिर भी उनको stress होता है. क्यों होता है? क्योंकि मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे वहां पे कोई जज तो नहीं करेगा, लोग मेरे को कैसे देखेंगे, will I be able to communicate in front of them properly? ये सब हमारे दिमाग में चलता रहता है, and that is what causes us stress. So positive, कभी कभी तो वेडिंग पे जाना है तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है. और मैंने ये देखा है कि मतलब काफी लोगों को वेडिंग में जाने से पहले क्या पहनना है, वेडिंग की तैयारी हो गई. अभी राइट नाउ माय फ्रेंड्स आर प्लानिंग टू गो टू गोवा, और उनको बहुत स्ट्रेस है कि बीएनबी बुक करा या नहीं करा, क्यों नहीं करा, एंड यू नो दे आर डेली टॉकिंग अबाउट दिस. लाइक इतना स्ट्रेस हम क्यों ले रहे हैं फॉर अ वेकेशन इज सपोज्ड टू काइंड ऑफ ईज अस डाउन, बट हम उसमें भी बहुत स्ट्रेस लेते हैं, राइट. एंड व्हाट हैपेंस इज when you feel stress, your body sends out cortisol. ठीक है, it's a hormone, and your body sends that out. It kind of उससे पहले भी एक hormone release होता है which kind of leads you to fight and
flight response. या तो आप fight करोगे या you will just get away from it. Right? And that's the basic nature of human being and that's how we have evolved. तो कभी कभी थ्रेट इतना सीरियस नहीं भी होता है बट आपका बॉडी रिएक्ट ऐसे करता है कि बहुत सीरियस थ्रेट है और आप इसको कैसे डील करें, राइट? कॉर्टिसोल कैन मेक यू क्रेव शुगरी सॉल्टी फैटी फूड्स. तभी बोलते हैं ना स्ट्रेस ईटिंग बहुत होती है, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है स्पेशली जब ब्रेकअप हो जाता है, राइट? एवरीबडी वांट्स टू हैव आइसक्रीम आफ्टर ब्रेकअप because your brain thinks it needs fuel to fight whatever threat is causing the stress. तो कुछ तो उसे खाना है, आपके ब्रेन को लग रहा है ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, but that is just a reaction and that's how your body feels. That might not necessarily help you, right? Okay, moving on. Sorry. Okay. Now coming to stress management, हम लोग stress को manage कैसे कर सकते हैं? So we all understood कि stress होता क्यों है, हमें पता already था कि stress होता क्या है, and now we are talking about stress management because the session is about that. I would have loved to spend more time with you folks, talking about various things, but since the time is limited, it's just half an hour. I just tell you the pointers that I've prepared for you, and that might help you in some or the other way, right? So starting with making lists and prioritization. Like a lot of you are saying ki workload meko, I get stressed because itna sara workload hota hai. So sometimes it's not the workload, it's the idea of the workload. क्योंकि हम words वो बोल रहे हैं, हमारे दिमाग को वो reaction, हम load बोल रहे हैं, हम already workload बोल रहे हैं. जब हमने load बोल दिया तो load किसी के ऊपर रख दोगे तो stress ही होगा ना, right? So that's why the kind of words we are telling ourselves about our work, the way we are perceiving our work also causes stress, versus it really being a stressed out environment. कभी कभी इतना stressed out environment होता नहीं है जितना उसे हम अपने head में बना देते हैं. And I think a lot of you would agree with me on that part. And if you do, please write it down on the chat box. कि कभी कभी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा हम उसे अपने हेड में बना लेते हैं उसको बार बार बोल के. And also I've realized that lately, specifically, जब से mental health has become, a topic of discussion, a lot of people have kind of found calling burnout as a cool thing. Or, I mean, and I see that, right? कि burnout नहीं भी हो रहा है तो भी burnout हो रहा है. Because सब burnout हो रहे हैं आसपास. So that is something that I find very fascinating, especially in my study, that a lot of you said, yeah, कि इतना बड़ा workload कभी कभी होता नहीं है, इतना काम होता नहीं है जितना अपने सर पे बना देते हैं. Sometimes it's very simple, but because we take a lot of stress, we are not able to think straight. So just the very first thing you ever do is make a list. Copy पे बनाओ, मोबाइल पे बनाओ, लैपटॉप पे बनाओ, कहीं भी बनाओ. Just make a list. सुबह उठ के there should be a section in your notebook or if you journal, if you write down your thoughts of the day. The first thing you do is write down brain dump. उससे पहले आप affirmations, positive चीजें लिख सकते हो mornings में, but जब भी आप अपना काम शुरू कर रहे हो उससे पहले आप brain dump का एक list बनाएं और उसमें you write down the things that you are going to do. अब उसमें से कई ऐसी चीजें होंगी जो एक्चुअली प्रायोरिटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको आज ही करनी है, बट आपके दिमाग में चल रही है. द मोमेंट यू पेन इट डाउन and you say, no, I will do it on a Thursday, not a Monday, your mind will automatically receive कि हाँ ठीक है यार बॉस वो चीज तो sorted है, वो तो मुझे Thursday को करना है, तो उसके बारे में वरी होना अपने आप ही बंद हो जाएगा. So just creating a brain dump really helps. Okay. Second is disconnect and decompress. अब मान लो कि स्ट्रेस हो गया, ठीक है, अब आपको नहीं पता था, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि स्ट्रेस होगा, आपने पूरी कोशिश करी कि हाँ आज तो मैं स्ट्रेस आउट नहीं फील करूंगी या करूंगा, बट उस समय आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है फॉर सम और रीजन, आप कंट्रोल नहीं कर पाए. तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज डिस्कनेक्ट. जो चीज आपको स्ट्रेस आउट कर रही है उससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर जाओ, राइट, एंड डीकम्प्रेस. आई एम नॉट सेइंग रन अवे फ्रॉम योर इशू, okay, that is very different. Something that is stressing you out unnecessarily or even necessarily, you're not able to understand, decode, do anything about it, just disconnect. Go for a walk, right? Take a nap. Take a maybe 5-minute dancing break. That really energizes you and you feel less stressed, right?
you know, right, like there are positive hormones that are released that makes you feel really happy when you dance or when you do something you like. Gardening पसंद है, gardening करो. Drawing करना पसंद है, drawing करो. 5 मिनट, 10 मिनट doodle करो. That's it. Don't do anything. उस समय just deconnect. सोना पसंद है, सो जाओ 10 मिनट के लिए. Take a quick power nap for 15 minutes. But disconnect at that moment. If that has happened, just do that. Third is, if you are in the middle of something where you cannot really disconnect, but you just can take maybe 2 minutes off. So 2 minute के लिए have breath work exercise. And एक और चीज है, breathing जो process होता है, I think आप में से कई लोगों को अब तो खैर schools में breath work के बारे में काफी कुछ बताना शुरू कर दिया है. And you know, there's happiness curriculum and there's a lot of things floating and a lot of you already know कि breathing techniques क्या होती है. But अगर नहीं पता है ना, तो एक YouTube पे चले जाओ और एक कोई अच्छा सा चैनल जिसके सब्सक्रिप्शंस बहुत ज्यादा हैं और थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा है, एंड आई थिंक यू गाइस आर बिग इनफ टू फिगर आउट कि चैनल ऑथेंटिक है या नहीं है, एंड you just pause for 2 minutes and do the breath work exercise with the instruction the instructor is providing, right? कई लोग breathing ही correct तरीके से नहीं करते. So I think that is another aspect that you can try. Just taking 5 long breaths can make you feel so much better. And पहले मुझे लगता था कि नहीं यार 5 breath से क्या होगा, but trust me, I've been doing it for a while now, for many years now. Just doing the breath work exercise can ease you out in the moment. It is one of the most effective techniques possible, and that is one of the reasons why, you know, पूरी दुनिया आती है योगा करने इंडिया में, right? So we already have the hacks. You have to just try that. The fourth one is give yourself some grace, right? There's a lot of time when something like this happens and you start blaming yourself. You start एक तो पहले stress हो रहा है, ऊपर से अपने आप को और ज्यादा गुस्सा कर रहे हो कि नहीं यार अब तू stress ले रही है. See, you are that kind of a person who takes a lot of stress and you start judging yourself, right? So cut some slack. Stop judging yourself. Don't kill yourself for stressing. It's okay. हो गया. We have 2 more techniques to try out. हम लोग mindfulness practice कर सकते हैं, meditate कर सकते हैं, हम disconnect, decompress कर सकते हैं. We have those options. So please don't stress about stressing. So that's one thing that a lot of people also do. I also do. I'm a human. I make mistakes, but then I learn from them. And the last one is practicing gratitude. So when I thought of stress management and I thought of the 5 things I'll tell you, मैंने ये सोचा कि चलो पहले 4 तो ऐसे हैं जो अगर बता दिए आप खुद भी ट्राई कर लोगे और आप implement कर लोगे. Even though I can deep dive into them also, if I get a chance to talk to you later sometime, I will be able to like kind of help you with more tools and techniques that can really help you. And these are not like extensive, exhaustive techniques. These are very simple techniques. बहुत ऐसा मतलब rocket science नहीं है. छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो एक्चुअली आपके डे को बहुत बेटर कर सकती हैं. ग्रैटिट्यूड इज समथिंग आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल से कि थैंकफुलनेस प्रैक्टिस करना चाहिए. यू नो यू शुड बी शुक्रगुजार होना चाहिए आपको आपके पास जो चीजें हैं उसके लिए. बट आई थिंक वी डोंट रियली नो हाउ टू पे ग्रैटिट्यूड. हम लोग कैसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें काफी लोगों को नहीं पता होता है. So I think that is one thing that I wanted to deep dive in this session. उसके बारे में मैंने पूरा सेशन क्रिएट करा है बिकॉज 2 चीजें जो मेरे को एटलीस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, बिकॉज आई ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड मेनी टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल कम बैक एंड आस्क मी कि अच्छा ठीक है, यू वर्क एट वेदांतु, यू आर एन एडवाइजर इन अ स्कूल, यू ऑल्सो गो एंड गिव स्पीचेस, आप संडे को फिर टाइम भी निकाल लेते हो सेशंस के लिए, आप कैसे करते हो? सो दिस इज व्हाट आई डू. I pay gratitude and I breathe. These are the 2 most effective techniques that has helped me. All of the other techniques are also good, right? But they are in the moment, right? When you're feeling stressed, brain dump कर लिया. But अगर brain dump मेरा exercise ही है दिन भर का, मैं अगर सुबह उठ के सबसे पहले brain dump वैसे ही करती हूँ, तो मेरे लिए तो habit हो गई. Then I will not do it only when I'm feeling stressed. I'll do it any which ways. मैं stress नहीं भी feel कर रही हूँ, तो भी मैं brain dump करूँगी. Right? So don't wait for the situation to arrive for you to, get stressed to de-stress. You can always make, so these are the lifestyle changes that I've made. But 2 things that are also lifestyle changes, but even if like kuch bahut hi bizarre situation bhi ho jaye, of course, like if there is a very serious situation, everybody goes through emotions. If somebody loses a loved one
or if that is a proper channel of grief that you will have to go through. Grief कोई escape नहीं कर पाया आज तक, तो वो तो हमेशा होगा और हर किसी के साथ होगा, चाहे आप बिलियनर क्यों ना हो. If anybody loses a loved one or something very, किसी का accident हो गया, कुछ बुरा हो गया, God forbid, तो वो तो एक टाइम ऐसा है जिसको आप actually you cannot do anything about it. At that time, best you can do is breathe. Right? I think that has always, but वो आपको de-stress नहीं करेगा. Maybe आपको थोड़ा सा उस moment को accept करने में help करे, but the 5 layers of grief everybody has to go. So that is a different thing. I'm talking about daily stuff, right? Here what we are talking about is, हम लोग digress नहीं करेंगे. हम बात कर रहे हैं कि हमें दिन भर दिन जो stress होता है, especially बच्चों को या young आप college going students हैं या young professionals हैं, तो काम का जो स्ट्रेस होता है और उसको लेके जो हम और स्ट्रेस लेते हैं, दैट इज अ विशियस लूप. कई बार तो लोग स्ट्रेस लेते हैं, लाइक आई टॉक्ड अबाउट, राइट? सो देयर इज वेयर 2 things have really helped me, and I have gone through that journey. I still sometimes go through that. I think what really gives me peace is breathing and gratitude, and that is what, if nothing you take from this session, take this from this session. 2 techniques: breathing and gratitude. Coming back to gratitude, because that's something I wish for you guys to understand in depth. Okay, so we will do it through a method of art journaling. You can do some basic bullet journaling also, not necessary कि आपको proper आर्टिस्ट की तरह ड्रॉ ही करना है. अगर आपको नहीं पसंद है ड्राइंग और आपको एकदम, माय ब्रदर रियली लाइक्स मेकिंग क्लीन एंड क्लियर एंड कट पेजेस जिसमें वो कुछ भी आर्ट एंटरटेन नहीं करता है, जस्ट वांट्स टू मेक बुलेट्स एंड राइट डाउन, तो वो उस तरीके से करता है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू लाइक, some of my friends really like drawing and doodling, and that also helps them unwind, and some people just like want to write down in plain simple sentences. It is okay, whatever medium you choose. The end goal is कि हम लोग gratitude practice करें. Gratitude होता क्या है? It is an affirmation of goodness. It is it is just counting your blessings. It's an easier way of saying it कि हाँ यार, मेरे सर पे छत है और मैं अभी जब सुबह उठी हूँ तो जिंदा हूँ और मेरे loved ones भी सारे जिंदा हैं, right? It is such a blessing. Like, there are people who are losing lives daily, right? We hear about it every day. Don't you hear about people dying, or don't you hear about people going through accidents or something worse? But you should feel grateful that, hey God, first of all, हम लोग तो जिंदा हैं, हम ठीक ठाक हैं, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, right? The very first thing to feel grateful for, that you are alive, you're breathing, you are experiencing so much in this life, and there is so much to be happy about, right? So gratitude, aap sab samajhte hain, right? It is thankfulness, it is an affirmation of goodness, it is counting your blessings, right? तो मैंने एक ये बहुत इंटरेस्टिंग ना लिज एंड मॉली करके एक इंस्टाग्राम में पेज है, शी इज ऑल्सो रिटन अ वेरी गुड बुक. थोड़ा अगर आप कॉलेज में है तो आपको फिर भी समझ आएगा, स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा अर्ली हो सकता है, but eventually when you get into workforce, इस बुक को जरूर पढ़ना. She talks about your work environment, हाँ, जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ के environment का, and वो बहुत interesting ऐसे notes बनाती हैं, and she kind of designs it and puts it on Instagram, and experiences that we all have but we don't talk about. So that is what she focuses on. Liz and Molly, you can actually follow her on Instagram if you are on Instagram. So for gratitude, she had created this, and I really loved this one. She said reasons to express gratitude. कभी-कभी समझ नहीं आता कि यार क्यों thankful feel करें. आज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं बड़ा मेरे साथ, आज तो मुझे किसी ने सरप्राइज गिफ्ट दिया नहीं, आज वैलेंटाइंस डे पे मुझे किसी ने प्रपोज तो किया नहीं, तो why should I feel grateful, right? So these are small things you can actually think of so many, and I will also ask you what are the things you could be grateful for, and some can be really funny also, huh? So she says desk chair is in the perfect height. कई बार होता है ना कि आपका अगर मूवेबल चेयर है तो आपको समझ ही नहीं आता यार थोड़ा नीचे करूं थोड़ा ऊपर करूं, बैठना कैसे है, मतलब ये चेयर की हाइट ठीक नहीं है, ये डेस्क का हाइट ठीक नहीं है, and you get irritated about it, right? But if your desk and chair is perfect when you are sitting,
इट कैन बी इन अ स्कूल, इट कुड बी इन अ ऑफिस, इट कुड बी, आप लोग तो अभी वर्चुअली स्टडी कर रहे हो तो वर्चुअल स्टडी एनवायरनमेंट में, और या फिर आपने सपोज आपके पास टेबल है, जो बेड टेबल है, बहुत सर्दी का टाइम है और आपने उसे बहुत अच्छे से अरेंज कर लिया और आप एकदम फिट फिट बैठ रहा है आपके, यू फील सो हैप्पी, राइट? सो दैट इज अ थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. हर रोज नहीं होता ये, राइट? 2 week old manicure still looks great. It's a very good example. मैं 2 हफ्ते पहले नेल पॉलिश लगाई थी, अभी तक चल रही है, खराब ही नहीं हुई. तो thing to be grateful for, right? AV works on the first try. आप प्रोजेक्टर लगा हुआ है और आपने पहली बार उसको लगाया और पूरा एकदम मस्त चल रहा है, या फिर आपने कोई और टेक्निकल चीज करी घर पे और जो यूजुअली खराब रहती है बट आज बड़े अच्छे से चल गई, राइट? कोई मशीन है बहुत अच्छे से चल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. And then sometimes even our friendship, right? The friendships that we have, we can call up our friends, crib, cry, yell, do whatever we want to. आज मन नहीं लग रहा है, चल मोमो खाने चलते हैं, right? We have all those options, है ना? So we can always be grateful for such things. Um, a shared connection, you know, we went to the same high school and had common friends. So कुछ ऐसे friends होते हैं जिनके साथ आप स्कूल भी गए और उसके बाद भी वो आपके common friends हैं. एंड येट हम कभी कभी उन्हें सिर्फ कभी कभी सिर्फ हाई और हेलो बोलते हैं और कुछ नहीं कहते, right? We don't talk beyond that. So maybe today we can be grateful to them and we can talk to them, and because we talked to them and we had a good conversation, that could be a reason to be grateful for. And when you focus on the good, right, it's all about your perception. आपके पास एक प्रॉब्लम है, राइट? 80-20 रूल उसको बोलते हैं. हमारा 20% ऑफ फोकस डिटरमाइन करता है हमारी 80% ऑफ लाइफ होने कैसी वाली, राइट? अगर हम उस 20% में लिटरली नेगेटिव सोचते रहेंगे, या एंड आई वुडंट लाइक टू लेबल इट एज नेगेटिव पॉजिटिव ऑनेस्टली, बिकॉज दीज आर ऑल फीलिंग्स एंड वी शुड फील ऑल फीलिंग्स, सैडनेस, हैप्पीनेस, सब कुछ, एज लॉन्ग एज देयर इज एक्नॉलेजमेंट कि हाँ नाउ आई एम फीलिंग सैड, बट अब इस सैड फीलिंग से मैं ओवरवेल्म हो रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली, यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग बेटर. बट वी ऑल वांट कि हम अच्छी फीलिंग्स फील करें, राइट? हम बहुत देर तक सैड नहीं रहना चाहते हैं. बट कई बार ऐसा भी होता होगा आपके साथ कि आपका रोने का मन करता होगा और आप रो के अच्छा फील करते होगे. मेरे साथ काफी होता है. मैं जब भरी हुई होती हूँ एंड इफ आई एम लाइक बहुत टाइम से, यू नो, आई हैव नॉट रियली shed tears or I've not, I just cry, and that makes me feel so much better, right? So that is also because I felt the feeling, I let the feeling express through tears. But if I'm holding that back, right, that will cause harm. If I'm not accepting I'm feeling bad, that will cause harm. So all of that, you know, together, put together, uh, will be a part of your life. Nobody is saying कि negative feelings या जिसे आप बोलते हो या unpleasant, actually the word is unpleasant, unpleasant feelings नहीं होंगी. Feel the feelings, acknowledge it, it will automatically pass. And one thing that, you know, I mean, there was a story also which was very interesting. Somebody said ki, I don't have the time to tell you the story, but someday hopefully I'll tell you the story as well, that कोई भी चीज ना constant नहीं होती है. So अगर बहुत खुशी है तो feel happy, you have the right to feel happy, but you should always remember कि ये happiness भी pass करेगी, right? So this too shall pass. एक sentence है जो बहुत बोला भी जाता है, right? This too shall pass is true for every feeling, okay? It is true for happiness, it is true for sadness, it is true for you feeling stressed, it is true for also you feeling de-stressed, right? बट हम ज्यादातर कोशिश क्या करते हैं अपनी लाइफ में कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स से इफेक्ट ना हो. जो हमारी सिचुएशंस होंगी वो तो होंगी ही होंगी, राइट? बट हम उनको कैसे टैकल करते हैं, कितना एक्सेप्टेंस करते हैं, ज्यादा खुशी में बहुत बहुत उछल नहीं रहे हैं और ज्यादा गम में बहुत ही एकदम डीप नहीं जा रहे हैं. दैट इज द बैलेंस वी ऑल आर ट्राइंग टू स्ट्राइव. बट हम में से कोई भी बुद्धा नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लाइफ टाइम टू गेट देयर. बट हम लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि हम उस बैलेंस के आसपास रहें. एंड दैट्स व्हाई ग्रैटिट्यूड, बिकॉज एवरी डे कितना कुछ होता है हमारे दिन में, राइट? सुबह उठे, किसी से लड़ाई हो गई, ऑफिस में कुछ खराब हो गया, या स्कूल में मजा नहीं आया, टीचर ने डांट दिया, कॉलेज गए तो यार आज भी वर्चुअल क्लासरूम है, आज भी कॉलेज नहीं खुला, वट एवर रीजन, लाइक वी आर फ्रस्ट्रेटेड, ऑनलाइन पढ़ के थक गए हैं, अभी डेडलाइंस ही नहीं खत्म हो रही है, राइट? कितना कुछ चलता है. बट वेन यू जस्ट सिट बैक, राइट, दिन के एंड में,
और 3 ऐसी चीजें या 4 ऐसी चीजें लिखते हो जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो, तुम सोते पीसफुली हो, that really helps you de-stress, right? um, Now what do we do when we have to start practicing gratitude? तो अब मैं actionables बताती हूँ. So one is setting intentions. You decide to do it regularly and with complete awareness of the moment and things you are grateful for. एक होता है कि हमें बोला किसी ने, यार ग्रैटिट्यूड में 3 चीजें लिख दो. मैं अपने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मम्मी मुझे खाना देती है. मैं अपने टीचर के लिए ग्रेटफुल हूँ, मुझे इतना 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 बताती हैं, ऐसा ऐसा करती हैं. और आपने ऐसे ऐसे लिख दिया, राइट? बट यू डिडंट रियली थिंक इट थ्रू, यू जस्ट रोट इट डाउन बिकॉज जो पहले 3 बंदे आपके दिमाग में आपने लिख दिया. दूसरा होता है कि आप डिसाइड करते हो कि नहीं यार, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू. अब रोज तो आप ये चीज नहीं लिख सकते, राइट? सम डेज यू विल रियली फील कि हाँ, आज मम्मी ने खाना ऐसा बनाया और अगर आज वो दिन में मुझे खाना नहीं देती तो शायद आई वुडंट हैव गॉन थ्रू द सेकंड हाफ ऑफ द डे व्हिच वाज वेरी टफ. बट क्योंकि माय टमी वाज फुल, मेरे को मुझे एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. येस्टरडे एक्चुअली आई वाज वेरी क्रैंकी बिकॉज मैंने खाना नहीं खाया था दिन में, एंड बिकॉज मैं पूरे दिन मीटिंग्स थी एंड माय मदर केप्ट सेइंग खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले, एंड आई डिडंट ईट माय फूड बिकॉज ऑफ व्हिच आई वाज वेरी क्रैंकी. But today in the morning, first thing I had my breakfast. So now I'm full, I'm feeling very nice, right? So there are certain physical things also that you have to do to make your body feel better, right? So similarly, setting the intention कि उस दिन ये चीज हुई, इस वजह से आई एम ग्रेटफुल. नाउ टुडे आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट माय मदर फेड मी इन द मॉर्निंग एंड आई एट. आई एम आल्सो ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि मैंने वो खाना खाया जिसकी वजह से ये चीज, आई एम एबल टू फील बेटर, right? So sometimes you have to also thank your own self for taking the action that you were not taking otherwise, right? It could be any example. So setting intentions means, coming back, setting intentions means कि you decide कि हमें एक तो regularly grateful gratitude practice करना है and with complete awareness, ठीक है, कि आज ये हुआ, मुझे ये feel हुआ तभी. And there are moments, आपको पता होगा दिन में कभी कभी आप कुछ चीजें देखते हो, suppose a smile of a child, and that is so nice, मतलब बहुत प्यारा सा बच्चा, आप उसकी शक्ल देख रहे हो और आपको बहुत खुशी मिल रही है, राइट? एंड दैट हैपेंड बाय चांस, बट उस मोमेंट पे आपको लगता है ओ माय गॉड, मेरे को ये देखने को मिल रहा है, आई एम सो लकी, राइट? या आप एक बहुत प्यारा सा सनसेट देख लेते हो एंड यू आर लाइक वाओ, आई गॉट अ चांस टू सी दिस सनसेट टुडे, राइट? तो यू कंप्लीटली अवेयर, आपको वैसा फील हुआ इसलिए आपने ग्रेटिट्यूड लिखा. जस्ट बिकॉज वो जो ग्रेटिट्यूड का एस्से आता है एक बुक में और उसमें ये 3-4 चीजें लिखी होती हैं और मुझे वही लिखनी है, उस वजह से मत करो. डू इट बिकॉज यू रियली वांट टू डू इट एंड यू आर अवेयर ऑफ इट, राइट? नाउ द बेनिफिट्स आई विल क्विकली टेल यू. To improve sleep quality, sleep, which is again very important to de-stress, and 8 hours of sleep is very important. I can't lay enough emphasis on this. उसके बिना दिन अगर चला रहे हो तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा. And hence, if you practice gratitude, you will also have good sleep. Form healthy habits. It is a very healthy habit to have. Increase resilience, lower stress. आपका resilience increase होता है to fight the battles because you're like, hey, I have these many things also. This is a part of my life which is unpleasant, but these parts of my life are very pleasant. So you focus on the pleasant part. And that is what you're going to increase and attract in your life also. Improve your self esteem, आपका confidence बढ़ेगा, right? हमें लगता है कि हमारा communication खराब है. But there are people who have never studied English. There are people who don't even know letters, right? You look at somebody who works at your home and say your gardener, and did he have the opportunity you have today to attend this session? Think about it. How lucky you are, right? Happier for others' success. Very important. कि आप दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हो. Satisfied in relationships. It makes you feel satisfied in relationship because some days you're like, my mom is so cranky. She's doing this, she's doing that, she's doing that. But the days when she puts her hand on your head or when she, gives you a hug, and if she wouldn't have done that, you might have not felt the confidence you have in yourself. Isn't it important to focus on that? And hence, by writing those gratitude points, जब भी वो लड़ाई होगी, आपको अपना खुद का journal याद आ जाएगा कि oh, I had written कि my mom did this for me. Connected to the universe self, आप खुद से connected feel करोगे, आप universe से connected feel करोगे. And it eases down the symptoms of depression. Gratitude also helps
in feeling you, in making you get out of the depressive phases in life. And एक ये मुझे बहुत अच्छा quote लगता है, you can appreciate the flowers in somebody else's garden while still watering yours, right? आप दूसरों के लिए भी अच्छा फील करना शुरू करोगे. This is the best thing that gratitude does, right? When you feel grateful to others, you start appreciating them, and not see, jealousy is something that we cannot avoid. All of us are jealous. If somebody says I've never been jealous, I don't think there is a person that exists on earth like that, right? Everybody at some point in time, for some reason, has felt jealous, and that is okay. As long as you acknowledge it and it shifts, you will see the moment it shifts, you will start appreciating things. So it's important that you appreciate people, because then you will stop feeling, you or probably the frequency of jealousy would reduce. So, and how do you create a gratitude art journal or a journal? Imagine this. You take an art journal, write about the things you are grateful for, and make some art on the art journal page. अगर आप art बना सकते हो तो, अगर नहीं बना सकते, that is completely okay. You will definitely be more aware of your words when you write them down and look at them and read them a few times. You take this time to focus only on the things you are grateful for and the art around it. अगर आपने art नहीं भी बनाई है तो चलेगा, but अगर आप उसे बार बार read करोगे, you take out like 5 minutes in a day to be grateful, it will have drastic shift in your life. अब मैं आज के लिए कुछ prompts बता रही हूँ, and I want all of you to write it down. While we are talking, you can just focus on that. But before I go to the prompts, I want to tell you this. Tips to build a habit. आप कैसे gratitude का habit build करोगे? You choose a journal that you can place on the desk or near your bed that catches your eyes attention. कोई भी चीज अगर आपके बेड या आसपास से दूर होगी ना, या आपके 1 arm distance में नहीं होगी, तो आप उसे नहीं उठाओगे. ये फैक्ट है. बहुत लोग बहुत सारी बुक्स उठा के अंदर बढ़िया से लॉक करके रख देते हैं और उसे कभी नहीं खोलते हैं. बट जस्ट बिकॉज मेरे टेबल के एकदम पीछे आपको दिख रहा होगा, देयर इज अ पूरा बुक का प्लेस, तो मेरे लिए बहुत ईजी होता है. मैं जैसे ही राइट देखती हूँ, मुझे किताब दिखती है, मैं निकाल के पढ़ लेती हूँ. right? So that is one thing that you should do. या तो अपने बेड के पास रखो. मैं तो I usually keep my journal near me. Like I sometimes even keep it in my bed and sleep. So when I wake up, the first thing I look at is my journal, right? So it should be close in proximity, right? Choose just 3 days a week to write. रोज journal मत करो, 3 दिन करो हफ्ते में. Right? Because sometimes when you do it every day, you don't get to process your emotions. So regular can also be 3 days a week. Regular doesn't mean rose only, right? Mark it on your calendar to hold yourself accountable morning, evening. अपने calendar में या जो भी आप वो सुबह brain dump बना रहे हो ना, वैसे तो उससे पहले करना चाहिए. But you can even like write it down wherever you like. If you plan your week ahead, और आपको पूरे हफ्ते के assignments वगैरह plan करते हो, तो उसमें मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, या ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, आपने 3 दिन डिसाइड कर लो कौन से हैं. मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम फिक्स कर लो. वो करना ही करना है, वो हैबिट बन जाएगी. अगर वो नहीं करोगे तो अजीब लगने लग जाएगा. सो that happens with exercise, right? जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करने लगते हो और जब नहीं करते हो तो वो अजीब लगता है, आज मैंने कुछ किया नहीं. सेम विल हैपन विद ग्रैटिट्यूड. कंसिस्टेंट स्पेस इनसाइड आउटसाइड रिचुअल. ठीक है, तो अब ये डिसाइड भी कर लो कि कहाँ पे बैठ के मैंने ये काम करना. मैंने बाहर बैठ के आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे इवनिंग के टाइम पे जब हवा चल रही है तब करना है, धूप में सर्दियों में करना है, या कहाँ करना है. मतलब यू कैन इवन कीप चेंजिंग दोज प्लेसेस एज पर सीजन्स. दैट इज योर चॉइस, बट हैव अ कंसिस्टेंट स्पेस फॉर एटलीस्ट अ सीरियस पीरियड ऑफ टाइम. इनसाइड घर के अंदर करना है, घर के बाहर करना है, तो वो रिचुअल की स्पेस आपको पता होनी चाहिए. 5 things and the why behind it. It is very important. And I'll give you an example. I'm grateful for my dog because he greets me when I come back home. पहली चीज क्या है? I am grateful for my dog. क्यों? Because he greets me जब मैं घर वापस आती हूँ, making me feel that like I matter to him. वो मुझे sense of belonging देता है. वो the dog makes me feel कि मैं घर वापस आ गई हूँ and I matter to this dog, right? So that is another. I have written the entire sentence. I'm feeling how I'm feeling and writing it down. Feel the feels, feel the emotions that come along where they land in your body.
Okay, you should also feel like, say, if I'm feeling happy, where in my body am I feeling happy? And a lot of people say in the chest, right? Sometimes it's even like in your neck that you feel happy. So when you close your eyes and you're feeling happy in relation to a particular incident, like a dog came and greeted me, where in my body I felt that, and it could be multiple parts of your body also, but then there will be one point where it is where you're feeling it very strongly. So just notice that. Just notice that before you write. Okay, close your eyes, feel the things that you're feeling about the things you're grateful for. You thought of 5 things and you thought, why am I grateful for these 5 things? कल हुआ, आज हुआ, परसों होगा. Sorry, not परसों होगा, मतलब कल हुआ, आज हुआ, या परसों हुआ. You can always write down incidents and write down why you feel so, right? Um, so coming back to the prompts, and I think these are the prompts that you can take a screenshot of. And if you want, I mean, I can even uh, tell the moderator here to kind of send you the presentation. I'm happy to. Who is the special person in your life you're grateful for? All of you can just quickly write it down in the chat box. Who is the special person in your life you're grateful for? कौन इंसान है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो? Mother, parents, keep that coming. Parents, ठीक है. सेकेंड वाला देखते हैं. आर यू थैंकफुल फॉर अ सिचुएशन? अगर आपने नहीं भी लिखा तो आप अपने दिमाग में सोच लो, राइट? हु इज द फर्स्ट पर्सन दैट कम्स? माय 4-year-old सिस्टर, ऑल द लव्ड वंस, किड्स. ठीक है. आर यू थैंकफुल फॉर अ सिचुएशन, इंसिडेंट फ्रॉम द पास्ट दैट हैज हेल्प्ड यू बिकम अ बेटर पर्सन टुडे? आर यू थैंकफुल फॉर अ सिचुएशन? कोई ऐसा सिचुएशन या इंसिडेंट पास्ट में जो हुआ जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जिसकी वजह से आप एक बेटर पर्सन बने हो आज? And the third one you can do as homework. The second one you can write down. Yes, yes, मत लिखो, क्या situation है वो लिखो. You have to write down. I am thankful. You have to practice it like this only, right? I'm thankful for my dog because he greets me when I come back home, making me feel I matter to him. कैसा feel कराते हैं, क्यों thankful हो और किस चीज के लिए thankful हो. So वो situation बताओ, क्यों situation के लिए thankful हो और तुम्हें कैसा feel हुआ और या क्या impact हुआ तुम्हारी लाइफ में उस situation की वजह से या उस incident या person की वजह से in the past. Okay, someone has written. I'm thankful for waking up today fit and fine. I would again ask you to think more, right? Are you thankful for a situation or incident from the past that has helped you become a better person today? ऐसा कोई situation जो past में हुआ या incident कोई ऐसा हादसा जो हुआ जिसकी वजह से तुम आज एक better person बन सके, या कोई इंसान जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम better person बन चुके, और वो क्या था और उससे क्या impact हुआ? I'm thankful for having Vijaya auntie to me who introduced spirituality to me. इसमें एक चीज और lacking है ऐश्वर्या. You have to write down what did spirituality do for you. तब ये complete होगा. आपको ये लिखना है कि आप किस चीज के लिए thankful हो, क्यों thankful हो और उसने क्या impact करा आप पे या आपने क्या feel करा उस चीज की वजह से. अगर कोई इंसान है तो आप impact लिख सकते हो, कोई incident है तो भी impact लिख सकते हो और feeling भी लिख सकते हो. Yes, I'm thankful for the day when I started teaching poor children because the knowledge that I share with them has improved my personal self. Now, see, this is so the incident is she started teaching poor students. Why? Because the knowledge that I share has improved my personal self. तो मेरे पे impact ये हुआ. And इसमें एक चीज missing है, रिचा. How do you feel about it? वो भी mention करो. I'm thankful for my best friend who helped me realize that I can't please everyone and it helped me achieve my mental peace. Perfect. उस किस चीज के लिए thankful हो, क्यों thankful हो और उससे क्या impact हुआ या उससे आप क्या feel कर रहे हो. मेरा mental peace आ गया है. That is what you're feeling. You're feeling peaceful, right? Anandita has written it beautifully. I'm thankful for spirituality that helped me in mind management, improved my relationships with everyone, improved my personality, and I've learned to be happy by myself. Wonderful, Aishwarya.
Great. So you're getting the examples, guys? See, you will only get better with practice. First day शायद आप exactly process ना कर पाओ, but धीरे धीरे. So as long as you know what all you're going to write down, you are in a good place. I think this example of the dog is very good, right? You're going to write about your feelings, your impact. You're going to write why, and you're going to express gratitude. ठीक है. So this is it. The last one you can, try at home. Look around. Are there things in your home that you're grateful to have? कौन कौन सी चीजें आपकी घर में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, क्यों ग्रेटफुल हो, और वो आपको कैसा फील कराती है, या उससे आपको क्या हेल्प मिलती है? ये 3 चीजें आप आंसर करोगे, राइट? So these are some of the prompts. You can even like kind of use more prompts, look up in the internet, and also like a lot of students reach out to me asking कि कौन सा ऐसा meditation है जो try करना चाहिए. I'm posting a link here. Just give me a minute. Yep, I'll just give you the link, and you can share that like with your friends also. And actually बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है. ये थोड़ा सा बच्चों वाला मतलब इसमें tone है, but even I try it out for grounding exercise, body scan. It's a very good meditation to try out. Okay, I've posted the YouTube link with everybody as well. Now I'm open to questions. I hope this session helped. I spoke a lot. Give me reactions. So कुछ तो मतलब reaction दो जिससे मुझे पता चले मैंने जो बोला वो कहीं पे मदद किया या नहीं किया. Divya has given me a reaction, nobody else. Okay, Sakshi did. Great. Quite insightful. Thank you so much. Okay. Now I'm happy to like take up questions. Thank you so much, ma'am, for your words. Now you would be taking the questions of the participants. The first question is that how to overcome procrastination. Procrastination. Interesting. So see, procrastination का ना बहुत ही interesting फंडा है कि आप usually उन्हीं चीजों को procrastinate करते हो जो the things that you don't like. Okay. So अगर आप ये समझ लो कि आप procrastinate क्यों कर रहे हो, उसके 2-3 reasons हो सकते हैं. एक तो है कि मेरे को वो चीज तो बहुत पसंद है, बट उस environment में 2-4 लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे वो काम नहीं करना, तो आप उसे procrastinate करते हो. या फिर ये हो सकता है कि नहीं मुझे काम ही पसंद नहीं. ठीक है. So then the bigger question is what you are doing. Is it okay to do that also? Are you in the right path? So I think it comes back to certain things. And I know for students sometimes you don't have the choice, right? So obviously if you plan your day better and if you do the brain dump और आप prioritization करोगे तो आप काम कर पाओगे. ठीक है. मैं ये मानती हूँ कि अगर आपने दिन में लिख लिया है ना कि मुझे ये 3 चीजें करनी है, तो you will do it, क्योंकि आपका दिमाग आपको बार बार रिमाइंड कराता रहेगा कि मुझे ये करनी है. But because people don't write it, they don't do it. Also कई लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा मतलब पेपर लेंगे, ठीक है, ऐसे मतलब इसमें मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डोंट जज देम, पूरा इसमें लिख देंगे कि हाँ मेरे को 5, 6, 7, 8, 10 चीजें करनी है आज, मैं सब कर लूंगी, मैं तो बस 30 बार खाना, राइट? तो वो नहीं होता कभी भी. सो हमेशा ना एक हीरो चीज होती है दिन की जो आपको 100% करनी है. एक चीज चूज करो, उसे तो करो ही करो, बाकी 2 चीजें में भी आप सेकंड और थर्ड नंबर प्रायोरिटी पे डालो, तो आपका प्रोक्रास्टिनेशन कंट्रोल हो सकता है फॉर द थिंग्स दैट यू हैव नो चॉइस बट टू डू. बट इवेंचुअली आई वुड से लॉन्ग टर्म चीज ये होनी चाहिए कि क्या आज तो चलो ठीक है मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने बोला है कि नहीं यार फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है, राइट? बट क्या आगे चल के मैं इस चीज को चेंज कर सकती हूँ? क्या मैं ऐसे कोर्सेज ले सकती हूँ जहाँ पे मुझे वही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो मुझे पसंद है, राइट? या मुझे वही चीजें करनी है जो मुझे पसंद है. लाइक दिस अप्लाइज अ लॉट टू द जॉब पीपल डू. अ लॉट ऑफ पीपल कम बैक एंड से आई डोंट एंजॉय माय जॉब. That is a bigger question. You are procrastinating because you're doing the wrong job. You don't like it and you're doing it, right? Of course there are times when there are situations ki for example मेरे को एक जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, बट मेरे पास चॉइस नहीं है कि मैं कोई और जॉब करूं. अभी पैसे कमाने हैं तो 2 साल का टारगेट रखो कि इतना पैसा कमा लें कि जॉब स्विच कर सके.
फिर मे बी उसमें थोड़ा कम भी मिलेगा तो चलेगा, राइट? बट उस जॉब के साथ साथ एटलीस्ट एक ऐसी चीज करो जो तुम्हें दिन में अच्छा फील कराती है. फॉर एग्जाम्पल, touch wood, I've not been in a job in my life which I didn't like. I mean, there are situations in my job, ऊपर नीचे बहुत होता है, और कुछ ऐसा काम होता है जो मुझे नहीं पसंद होता है. But I think for a period of 3 months I was in a role which was kind of very, मतलब मुझे पता था मैं छोड़ दूंगी अगर मैंने, it was a thing that I was just trying कि मेरे को समझ आएगी कि नहीं. I was exploring. So what I did at that time was, मैं उस जॉब के साथ साथ ना शाम के टाइम पे बच्चों को पढ़ाती थी, बिकॉज उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है. So the other thing that you could probably do is do something that you like along with the thing that you don't like, but you have to do out of compulsion. पैसे कमाने हैं, कोई और रीजन है, चॉइस नहीं है, 3 महीने के लिए मुझे काम करना ही करना है, तो करो. पर उसके साथ साथ एक ऐसी चीज करो जो आपको बहुत एनर्जी देता है. सो देर आर एनर्जी गिविंग वर्क एंड देर आर एनर्जी टेकिंग वर्क. कुछ काम करके आप कभी भी नहीं थकते हो, और कुछ काम बिना करे आप थक जाते हो उसके बारे में सोच के, एंड दैट्स व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट. सो द बिगर क्वेश्चन इज, are you doing the right thing? In many situations it is in our control. हम चाहें तो वो ना करें, पर हम फिर भी करते हैं because habit पड़ गई है, and hence we procrastinate. So there is where you need to shift your thinking. Yeah. Any other question? The next question is that why has stress over students increased these days? I think it's something that we all can't control. I think it's not just with the students, it's even with people who are working professionals as well. We're not meeting people, and I think we are all social beings. We need to meet people. We are not touching people. I think it's very important to hug. It's very important to shake hands. All of these are important gestures that human beings do in general. And I don't say in a romantic way always. I mean, it's important for you to hug your friend. It's important for you to hug your brother. But pandemic mein kya karte? I mean, you were maintaining social distance and all of that. So I think that's one of the reasons that a lot of people felt stressed. But the way that you could have managed that, or you can still manage that, is do a lot of exercise and sleep well. Drink a lot of water. I think itni basic cheezein hai na, har koi batata hai but karta koi nahi hai. And the moment you make it a habit कि मुझे इतने glass of पानी पीना है, like for me, you won't believe, I keep my bottles full, and जब तक वो खत्म नहीं हो जाती है मेरे को चैन नहीं पड़ता है. And if you're drinking water, if you are exercising, and if you are sleeping well, stress बहुत बहुत control हो जाएगा, बहुत control हो जाएगा. And I can just emphasize beyond limits on this. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं. और आप कोई भी डेटा ऑफ 15 ऑड पीपल उठा लो, और आप रैंडम डेटा उठा लो, आपको पता चल जाएगा कि या तो किसी की स्लीप साइकिल में प्रॉब्लम है, किसी कोई पानी नहीं पी रहा है, या कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तभी स्ट्रेस्ड है. पहला हमेशा रीजन फिजिकली होता है, उसके बाद बाकी सारे स्ट्रेसर्स आते हैं, राइट? द फर्स्ट रीजन इज ऑलवेज दीज 3 थिंग्स दैट आर नॉट अंडर कंट्रोल. एंड टेल मी one person in the audience right now who disagrees with me. I'm sure everybody of you deep inside know कि आप कितना पानी पीते हो, कितना एक्सरसाइज करते हो, और कितना. और कोई बंदा जो रोज रनिंग करता है, हमें कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे को फालतू बात पे स्ट्रेस हो रहा है, राइट? वो अगर उसका एक्सरसाइज रूटीन अच्छा है, टाइम से सो रहा है, तो हाँ, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको मैनेज करने के मैंने तरीके बता दिए. बट जो बेसिक है बिना बात के स्ट्रेस करना, वो तभी होता है जब आपकी ये 3 चीजें कंट्रोल नहीं होती, राइट? ठीक है. Any other question? Yes, ma'am. One more question. Like, as we know, teens are going through anxiety attacks nowadays a lot. So I think, so what should be the ways they can deal while getting off the anxiety attacks, or how to calm themselves? Sure. So the other day I put up a status on my LinkedIn, said that action is the antidote to anxiety. तो एंजाइटी तब होती है जब कोई एक्शन नहीं होता, राइट? तो whatever action deems fit, A is that you do that. काफी एंजाइटी, basic anxiety, and again I'm not talking about somebody who is suffering from anxiety disorder. That's a very strong word to use. Anxiety disorder is treatable, and that is treatable with the help of a psychologist. तो उसके लिए तो मेरा पहला recommendation होगा that if you think कि मेरे को बिना बात के मतलब bouts of anxiety हो रहा है, obviously that
that would have to do somewhere down with your lifestyle. Sometimes it's even hereditary, like depression could be hereditary. All of these things are also there. Us case mein, a therapist, a counselor, I would say a psychologist is the best person to visit. And there are many helplines and many ऑनलाइन आप सर्च करना, कुछ तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस में आपको सपोर्ट देने के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशंस है. So having those consultancies is very important if it is a disorder. And if you feel कि यार मैंने सब कुछ कर लिया बट उसके बाद भी एंग्जाइटी हो रही है, मैं रन भी करती हूँ, मैं आई टेक केयर ऑफ माई बॉडी ऑल्सो, माई लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग इज गुड, बट फिर भी मेरे को ये हो रहा है, देयर इज नो स्ट्रेसर इन माई बॉडी बट आई एम स्ट्रेस्ड, देन यू हैव टू गो टू अ थेरेपिस्ट. बट इफ इट इज वेरी बेसिक, इफ इट इज लाइक किसी इवेंट की वजह से एंग्जाइटी हो रही है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया आपकी लाइफ में या आपको टेंशन है, so then in that case, lifestyle is the way ahead. That's how you deal with it. You take care of your body, take care of your nutrition, take care of your, the few things that I've told are again like things that you can try. But taking care of your body, sleep, and exercise. These are the three best things that can cure anxiety also. And at the moment, like अगर आपको अभी anxiety हो रहा है, तो मैंने आपको जैसे मेडिटेशन के टेक्निक्स बताए, ग्राउंड करो. सबसे पहले अपने आप को अर्थ से कनेक्ट करो, ग्राउंड योरसेल्फ. एंड फॉर दैट ग्राउंडिंग, दिस मेडिटेशन, द बॉडी स्कैन मेडिटेशन दैट आई हैव सेंट यू, यू कैन डाउनलोड एनी ऐप. देयर आर सो मेनी एप्स जिसमें फ्री है, बट अल्टीमेटली आपको ग्राउंडिंग में क्या होता है, यू स्कैन योर बॉडी, you breathe through your body, and you feel connected to the earth. The moment you do that, your anxiety any which ways lowers down. So if you can learn that technique, that is the immediate response to your anxiety. उस समय आप अगर चाहते हो कि ठीक हो जाए. But in the long term, if you think it's a disorder or if it is not getting cured, then you have to see a therapist. That is what I would recommend. Yeah. Thank you so much, ma'am, for taking out time and helping everybody out and guiding them regarding such a crucial topic. Now, I would like to invite Smriti for the vote of thanks. Greetings to everyone gathered here. I take this opportunity to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who made this event a success. On behalf of Team Sahyog Junior and Senior, I'd like to express my heartfelt gratitude to our speakers, Mr. Ayu Kharbanda and Ms. Diksha Ahi, for taking time out of their busy schedules to grace the event with their speeches. We had the opportunity to hear your thoughts today, and they'll undoubtedly inspire us for the future. I'd also like to express my gratitude to Abhishek sir for enlightening us with his thoughts and motivating us to achieve our best. I'd like to thank the participants for their zeal and active participation. Further, I'd like to express my gratitude to the team leaders of Sahyog Junior, Anandita and Samya, and the team members Jia, Bhavya, Palak, Shreya, Divya, and Shubhangi for their tireless efforts in making this event a success. Last but not the least, Sarkari School is delighted to announce that the organization intends to continue the Prism of Possibilities series by hosting more guest lectures on enlightening themes with inspirational speakers. Thank you, one and all. We would thank the audience for being so patient. Thank you so much for making the event a huge success. I hope you enjoyed being a part of our event, the Prism of Possibilities. I would like to request the audience, if they have any feedback, they can share it in the chat or just unmute themselves.